when you feel you have a pattern on repeat, a very stuck pattern that doesn't make you feel joyful. It brings you down, it drains your energy, it makes you feel low and depressed and upset, and there's a certain stuckness. So that's when you would do a constellation session to interrupt repeated patterns. ओके, तो मैं जैसे फील कर रही थी उस समय जब मैं आपके पास पहले सेशन के लिए आई थी, मैं फील कर रही थी कि मेरी लाइफ एकदम केओटिक है, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी लाइफ में मैं कहाँ जा रही हूँ, जो मैं कर रही थी मुझे उसमें खुशी नहीं मिल रही थी। तो जहां पे भी मैं आइडेंटिफाई कर लूं कि कोई भी फीलिंग है ऑफ अनहैप्पीनेस या बिलोंगिंग नहीं है या कुछ भी ऐसी फीलिंग है जो मुझे कंफ्यूजन के स्टेट में डाल रही है, क्लैरिटी नहीं है मेरी लाइफ में, तो मैं इस कॉन्स्टलेशन को चूज कर सकती हूँ, क्योंकि हो सकता है ये मेरे फैमिली से आ रहा हो। इज दैट राइट? यस यस। ओके, अमेजिंग। तो अब जैसे मैं फर्स्ट सेशन के लिए आपके पास आई तो मैंने आपको अपनी इमोशंस बताया कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ। तो अब इसमें जो फैमिली कॉन्स्टलेशन का टेक्निक है उसमें हम एक्सप्लोर कैसे करेंगे अब मेरे इमोशंस को, बिकॉज मेरे तो बहुत सरफेस लेवल इमोशन है ना, तो आप डीप डाइव कैसे करते हो एज अ थेरेपिस्ट? या सो फॉर एग्जाम्पल, से वन पेरेंट और बोथ पेरेंट्स आर struggling with anxiety, for example, then it's like understanding where is your anxiety coming from. Are you also carrying their anxiety, right? So the way to explore is to understand the family background, that it can originate from there. And why does this phenomena happen in the first place? Because it comes out of a deep sense of love and loyalty that we have towards each of our parents, to family members. Okay, let me help you with this burden. I will help you to carry it. Comes from a kind of like a self-sacrificing place, which we're not always aware of. Most of the time we are unaware, completely unaware. It happens from there. So yeah, so constellation can also work as a diagnostic tool. Sometimes I see okay, it may not be, the root of this may not be in the family system, and it could be just something individual, a person's individual psychology, or messages and certain thought patterns, belief systems that they have picked up from culture, from society, from media. So this process helps to understand, is it coming from the family system or from other places? So it can also be used as a diagnostic tool. But yes, most of the time the therapist has a skill to know, okay, now constellation is needed. After doing a family history interview, understanding what are the traumas from the father's side, what are the traumas from the mother's side. And usually it's always accurate, when I feel, okay, now we have to do a constellation, like it's always needed, So, and also to explain, like constellation work, either you do a classical family constellation or you do what's called a structural constellation. So for example, an example of a structural constellation would be, I put a representative for Dinima, then I put a representative for power, another representative for wisdom, and another representative for love. So these are what we call attributes. They are not people, but they are attributes, and ultimately we are working with the energy of emotions. So whether it is a person, whether it is an attribute. So for example, the energy of power could resemble the energy of somebody in my life. Similarly with wisdom, similarly with love. So there is an overlap that happens, and it will relate to your personal life. So again, it is based on the skill and the experience and the know-how of the therapist to know which elements to even put forth in the constellation. And usually the very first constellation, it's helpful to always start with the parents,
because those are the first relationships that we have in our lives. It's the root of our relationships are the ones with our parents. So it's always helpful to start there first, and then for further constellations to explore other ways if needed. Like with power, love, it could be connection, sense of belonging, peace, joy. It could be so many different things. So तो मैं जितना समझ पा रही हूँ ये मोस्टली एक इमोशंस और एनर्जी के लिए टूल है, और इसमें भी एक तरीका होता है जिसमें आप सीधा एक्सप्लोरेशन के टाइम पे, डीप डाइव के टाइम पे थेरेपिस्ट आपके लिए फिगर कर लेता है आपके बैकग्राउंड से और आपके जनरल डिस्क्रिप्शन से कि हमें फैमिली कॉन्स्टलेशन यूज करना है जिसमें हम परिवार वालों को इंक्लूड करेंगे, या फिर इंडिविजुअल लेवल पे जैसे आपने 3 एस्पेक्ट्स बोले, पावर, लव और नॉलेज के, विजडम के, हम उस पे फोकस करेंगे, या फिर ऑल टुगेदर थेरेपिस्ट को कोई दूसरा अप्रोच या दूसरा टूल या टेक्निक यूज करना है, उस पे डिपेंड करता है, बट मोस्टली फैमिली से ही आता है। ठीक है, समझ सकती हूँ। तो अब इस स्पेस में जब एक क्लाइंट आपके पास आया है या एक पर्सन आपके पास आया है और आपने फिगर कर लिया कि हाँ मुझे इसके लिए फैमिली कॉन्स्टलेशन यूज करनी है स्ट्रक्चरल और परिवार के वे में, तो इस प्रोसेस में जो हीलिंग होती है स्पेसिफिकली, जैसे आपने बोला कि वो बस एनर्जी होती है और वो एनर्जी हमें फील हो जाती है अपने पेरेंट्स की उन फिगर्स के थ्रू या फिर ग्रुप सेशन में उस इंसान के थ्रू। तो मैंने पर्सनली अपने सेशन में एक्सपीरियंस किया है लेगो पीसेस के साथ कि एक मेरे फादर है और एक मेरे मदर है और एक मैं हूं, तो मेरे फादर और मदर की एनर्जी मुझ में ही समहाउ, मेरे मुंह से वर्ड्स ही वैसे निकलते हैं। तो वो एक्सपीरियंस हीलिंग का कैसा होता है फ्रॉम अ थेरेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू? मतलब मैं तो अपना बता सकती हूँ कि मुझे कैसा महसूस हुआ, वो अपने आप हो गया जैसे भी था, मतलब I was full of emotions and it got released एक सिचुएशन को लेके। हाँ, so the healing happens when you're able to basically, we have to feel in order to heal. It comes down to that. When we don't feel, then things get frozen, they get stuck, they get pushed down, they get suppressed, repressed, and then the body takes it over, right? This is how illnesses and imbalances start in the body, and there's a word for it in psychology which is called somatization. So what we cannot feel, then the body takes it over, right? So from a psychosomatic point of view, psychosomatic means having psychological and emotional causes. So psychosomatically it's been said, for example, even with cancer, people who cannot express their emotions and it's all stuffed within, that leads to these cells multiplying and creating cancers in the body. And I do believe in that most illnesses and disorders in the body are because of psychosomatic conditions, things that are not addressed, things that are not explored and released. And most of the time, it takes a lot of courage to do this kind of work. And it's not for everyone, one has to be ready to receive the gift of healing, to be able to go beyond fear and be in a space of trust. And it takes courage, it takes the person to be vulnerable to face their issues. So I feel a lot of courage is needed to do this work.